Now we have a panel discussion. The panel topic is Disruptive Technologies Transforming Education in the 21st Century. And ladies and gentlemen, I would like to call the moderator onto the stage. Can I have Mr. Anantha Krishnan, CEO Operations, Kalorex Group. Everybody put your hands together. A very warm welcome, sir. Now I would like to invite all the panel speakers. Can I have Miss Aditi, Goradia, Managing Director, Billimoria High School, Panchgani, Maharashtra. A very warm welcome, ma'am. Can I have the pleasure to have Mr. Sachin Vats, founder, Gurukul, the school, Ghaziabad, UP. Everybody put your hands together. A very warm welcome, sir, for this panel discussion. Can I have Dr. Niyati, Chitkara. Everybody put your hands together. And can I have Miss Shruti Sharma, Principal, Delhi International School, Dwarka. Everybody put your hands together. A very warm welcome to all the panel members. And now, I'm going to hand over the mic to our moderator, Mr. Anantha Krishnan, CEO Operations. Everybody put your hands together. Thank you. Yes. Over to you, Mr. Anantha. Shri Guru Bhyo Namaha. Thank you, everybody assembled here. Good morning, rather good afternoon. Good morning बोलना करके सोच के आया था लेकिन afternoon हो गया शुरू होते होते. Nevertheless, pardon me for my throat. I've been traveling to a lot of places, so गला खराब है, but I'll try to do justice whatever best possible. Thank you, Chandan, once again for inviting me, and thank you, panelists, for being with me, tolerating me for the next 1 hour. Thank you, audience, for being here. Nice topic, disruptive technologies transforming education. In fact, मेरे लिए all the more relevant है because हमारे company ने आज going ahead first time in Indian school education, Dr. Manjula Puja Shroff का AI clone avatar launch किया है. So disruptive technologies का part है और I'm here to talk about disruptive technologies. अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं industry में. Because ultimately advancement is what we all want for the betterment of everybody. So आज का topic transforming education and disruptive technologies, right? So पहले हम transforming education के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद disruptive technologies के बारे में आएंगे. Now a few questions before I go to this panel. This is a esteemed panel. एक बार ये लोग mic पकड़ते हैं तो फिर हमको वापस मिलता नहीं. तो पहले हम लोग पूछ लें, बात कर लें, फिर इनको देंगे, right? So पहला दिन स्कूल का याद है आप लोगों को किसी को? शायद नहीं याद होगा बिकॉज हम लोग मैं भी खैर बहुत छोटे रहे होंगे. बट जब हम एक लेवल पे बड़े हो गए थे, विच इज़ वी फिनिश्ड अ 10th स्टैंडर्ड एंड व्हेन वी केम टू अ 11th स्टैंडर्ड, लाइक द फर्स्ट बिग डिसीजन ऑफ आवर लाइफ कि कौन सा स्ट्रीम लेना है. आजकल के बच्चों के लिए काफ़ी आसान है बिकॉज दे वेल प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. हम लोग एज एजुकेटर्स उनको प्रिपेयर कर देते हैं. बट हमारे टाइम में जैसे राठौड़ साहब ने कहा था कि हम तो 3 टप्पर में पढ़ते थे. इनके पास तो फिर भी 3 टप्पर था, मेरे पास तो तरपाल थी ऊपर सर पे. मैं भी क्या दिल्ली का ही पढ़ा हुआ हूँ. हमारे सर के ऊपर तो तरपाल होती थी. वो कब फट जाए कब बारिश आ जाए हमें पता नहीं होता था. हम ऐसे ही पढ़ते थे. सो वी नेवर यूज्ड टू नो कि हमें क्या लेना है बिकॉज कल बारिश में भीगेंगे कि नहीं भीगेंगे वो हमारी पहली चैलेंज होती थी, राइट? साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स तो बात की कॉलेज चैलेंज है हमारी, राइट? बट आजकल के बच्चे दे आर वेरी वेल ओरिएंटेड. आपको जब आप 11th में आए थे, आपका पहला दिन याद है क्या? एनी ऑफ यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे इन 11th स्टैंडर्ड? इवन द पैनलिस्ट याद है? याद है. आपको जब पहली बार, हमारे ज़माने में हम थप्पड़ खाते थे, आजकल आप छू नहीं सकते बच्चे को. पहली बार जब आपने टीचर से थप्पड़ खाई थी वो याद है? पहली बार तो किसने थप्पड़ खाई थी टीचरों से? दैट्स नाइस. आई थिंक क्वाइट ऑफ अस. सो पहली बार जिसने भी थप्पड़ खाई थी याद है? ऑलराइट. आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है? नॉट टू द साइंस टीचर्स जो पढ़ाते हैं, टू दी प्रैक्टिशनर्स और टू दी पीपल हु जो पढ़ के आए हैं इसको. आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है? वर्नियर कैलिपर्स याद है किसी को? वर्नियर कैलिपर्स याद है. यानी कि आप उनमें से होंगे जो इंजीनियरिंग की तैयारी करे होंगे, इसीलिए आपको याद है. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन. शोले मूवी याद है? सबको याद है. कितनों को याद है? चलिए, शोले कितनों को याद है?
गुड नंबर ऑफ हैंड्स. नहीं मतलब जिनको याद है प्लीज हाथ उठाइए. आई हैव अ पॉइंट टू आस्क. लवली, ऑलमोस्ट ऑल एवरीबडी. व्हाट इज द डिफरेंस? वर्नियर कैलिपर्स ओनली 2 पीपल ने हाथ उठाया. 11th में कुछ लोगों ने हाथ उठाया. थप्पड़ ऑलमोस्ट ऑल जिनको भी पढ़ी सब ने हाथ उठाया. सो जहाँ जहाँ पे भी आपने एक एक्सपीरियंस किया कुछ स्कूल के अंदर, समथिंग विच यू रियली फेल्ट, यार आज के बाद ये ऐसा नहीं होगा या ऐसा ही होगा, दोनों में से एक. राइट? शोले देखने के बाद आज के बाद मूवी बने तो ऐसे ही बने. थप्पड़ खाने के बाद आज के बाद यार ये कभी ना हो. सो इन ईदर ऑफ द केसेस देवर एक्सपीरियंसेस. सो वेर एवर यू हैव एन एक्सपीरियंस यू रिमेंबर दैट. राइट? सो जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई अंडरस्टैंड. राइट? सो लर्निंग इज नथिंग बट एन एक्सपीरियंस. यहाँ तक सब लोग मानते हो मेरी बात को? लवली. अब आते हैं पैंडमिक की बात, अब आते हैं डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज की बात. पैंडमिक से पहले how many of us were on to Zooms of the world and or were on to Google Meets of the world, and उससे पहले Google टीम एक आती थी? How many of us? कि कोई था इसमें से? मैंने एक बार मजबूरी में एक बोर्ड मीटिंग करवाई थी क्योंकि वन ऑफ माई बोर्ड मेंबर्स वे नॉट इन इंटरनेशनल चले गए थे, नहीं आ पाए. बड़ी मार काट करके करी थी मैंने, बहुत मुश्किल से करी थी. आई रिमेंबर दैट डे. बट अदरवाइज कितनों ने क्लासरूम ट्रांजैक्शंस जूम में, गूगल मीट में, किसी में किया हो? नहीं किया था. राइट? 21 या 22 को कुछ लॉकडाउन हुआ. 3 दिन में समझ में आ गया था कि भाई स्कूल अभी बंद रहेगा महीने भर. 3 दिन में समझ में आ गया था कि अगर स्कूल नहीं चलाएंगे तो फीस नहीं मिलेगी. तो ऑल द राठौर साहब्स एंड सचिन वत्स एंड एवरीबडी इन द वर्ल्ड हियर, स्कूल नहीं चलाएंगे तो फीस नहीं मिलेगी, हमारी पहली प्रायोरिटी होती है. और जो प्रिंसिपल लोग बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं चलाएगा तो एकेडमिक पेडागोजी पूरी नहीं होगी, उनकी पहली प्रायोरिटी होती है. दोनों की प्रायोरिटी अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट. राइट? क्लियर कट समझ में आ गया था कि 1 महीना स्कूल बंद नहीं कर सकते. वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. राइट? सो देन वी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस. सो वो टीचर जो क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, आईसीटी को यूज़ करके एक डीएनए एक्सट्रैक्शन पढ़ाने में दिक्कत करती थी, आपसे लड़ती थी कि मेरी बस की बात नहीं है कि मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगी, वो टीचर ने भी बोला कैसे मुझे भी जूम सिखा, तो मैं भी अपना क्लासरूम जूम से करूँगी. राइट? सो 3 से 5 दिन में हम सभी ने फ्रॉम नो जूम टू जूम चले गए. राइट? अग्रीड? कितने लोग मानते हैं इस बात को? राइट? सुपर. नाउ व्हाट वाज इट? इट वाज अ रेवोल्यूशन. इट वाज अ टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हैपनिंग इन द क्लासरूम विद इन द स्कूल प्रीमाइसेस. राइट? अब आप रेवोल्यूशंस को याद करें. हिंदुस्तान ने कितने रेवोल्यूशंस देखी हैं अभी तक, या वर्ल्ड ने कितने रेवोल्यूशंस देखी हैं अभी तक? सो वी सॉ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1800 सेंचुरी समथिंग. वी सॉ द ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 समथिंग. Then we saw the flood revolution, the milk revolution, 1970s, 80s. We saw the great economic revolution, 1990s. We saw the internet revolution, 2000. We saw the mobile revolution, 2005. Then we saw the disruptive education revolution. सारी की सारी revolution में एक चीज़ common थी, which is adaptability. लेकिन सारी की सारी चीज़ में एक चीज़ जो change हुई वो है time lag towards adapting that technology. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करने में 10 से 15 साल लगे. कंप्यूटर एजुकेशन को अडॉप्ट करने में 15 साल लग गए, 10 साल लग गया. जूम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में 3 दिन लगा. सो विथ द एडवांसमेंट्स ऑफ वेरियस रेवोल्यूशंस, द लीड टाइम इन अडैप्टिंग टेक्नोलॉजी रिड्यूस्ड. राइट? इनवर्स इफेक्ट. सो कहीं ना कहीं वी एज इंडियंस आर रेडी मेंटली, फिजिकली टू अडॉप्ट डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज. ये तय है. अब किस तरीके से अडॉप्ट किया जाए ताकि एनथ बच्चा जो क्लासरूम में जो लास्ट बेंचर है उसको बेनिफिट मिला जाए. कुछ सवाल हैं उस प्रति जो ये लोग, दिस सीनियर पैनल इज सपोज टू बी आंसरिंग. राइट? एंड आई एम रियली हैप्पी दैट वी गॉट दिस काइंड ऑफ अ पैनल, ऑल सीनियर मेंबर्स ऑफ द एजुकेशन फ्रेटर्निटी. सो विल स्टार्ट विथ Aditi ji. Right? Aditi ji happens to be the founder, the co-founder in fact, of Billimoria High School, residential school. It's in Panchgani, a beautiful residential school. NEP कहता है pedagogy must evolve to make more experiential, holistic, integrated, flexible and enjoyable learnings. Right? आज की जो सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इंटीग्रेट करके ये पांचों वर्ड्स को जस्टिफाई करेंगे. enjoyable बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है एंड आउटकम ओरिएंटेड बनाना है, यानी कि एक्सपीरियंशियल बनाना है. सो व्हाट विल यू डू
in the school, or what have you been doing in the school wherein you're able to do justice to these 5 words as NEP has said? Thank you, Anantha. And senior most panel, not so senior. Jokes apart. So one of the first things we did when the pandemic hit was we realized, being a residential school, hamare bacche, they're from all over the world and all over the country, including remote parts of the country, where access, especially with the lockdown, access to notebooks, textbooks, learning material, the traditional learning material was not easily available, including to our teachers. Being a residential school, our teachers are from all over. So we went textbook-less. And CBSE fortunately has something extremely beautiful with the help of the NCERT called the Learning Outcomes document. So that is our guide since the pandemic all the way up till now, and will continue to be. So using the learning outcomes, we told our teachers, you know what, forget everything, do what you do best. Agar aap science teacher ho, you're an expert at science. So just teach your subject to the children age appropriately. Second thing is in terms of enjoyable, you know what, gadgets are enjoyable to kids, naturally. Our kids are constantly on YouTube or Instagram or whatnot. There are so many apps that they use other than your standard Instagram, YouTube, TikTok. Why not use it productively? So let them do it, let them use YouTube, let them use whatever AI tools as well that we have available, but let them use it to learn something new, to learn, or maybe learn something old that they're interested in more. So teachers as facilitators, you know, one of those words that we've been using for almost a decade now, it has to come into practice immediately. It has across the board in all of our schools, that we do not need to stand there teaching anymore. We need to stand there and say, learn, continue learning. And we need to help them weed out the untrue versus the true. Weed out what is, not real information, not real knowledge, and say, ye side pe rakho, let's talk about what the reality is. Say a child looks at a myth busting video or a life hacks video. Somehow the kids love life hacks videos. Bring it to class. Let's talk about it. Sachi mein ye ho sakta hai kya? That's where the science teacher, the social science teacher, the English teacher can say, this is real, this is not, let's talk more, let's find out more. So, I'm sorry, I know you're going to move ahead, but the topic disruptive technologies, I don't understand the word disruptive. So maybe Anantha, you're gonna explain this. Why is it called disruptive? Why is it disruptive? Disruptive का मतलब है कि you have a lot of challenge going ahead implementing it, right? So just one small thing, Wipro applying thought in schools जब आया था, I think the lady who was part of the main team is here, and from the Millennium School, Gitanjali ma'am is here. And when the Intel Teach to the Future program आया था, कितने teachers हम में से थे जो आगे बढ़ के accept किया कि मैं भी जाके सीखूं जो कि मैं classroom में implement करूँगी. So you have got one more lady here. So all the people who are here today, we should somewhere thank these two initiatives, right? They are the people who brought this disruption of ICT into the classroom, right? Today disruptive because अभी हम ICT तो ले आए, लेकिन क्या हम AI, blockchain, IoT and other things लाने के लिए ready हैं? क्या हम ML लाने के लिए ready हैं? Right? Indian Army is researching on deploying drones and drone dogs instead of real-time fighters. There's a documentary in I think Disney. So देखिएगा how these drones and the drone dogs are being trained with ML on the terrain, right? So are we technically ready to bring these things in the schools as teachers, as edupreneurs, as entrepreneurs? Are we really wanting it? That's why disruptive, right? Please go ahead. So should I take the next question on? Oh, yes, lovely. please. All right. So the next question, Sachin sir, founder of the Gurukul school. They run 2 schools in the NCR region. One of the forward-looking schools. I've gone to their schools a number of times, but then about 10 साल हो गए थे. उस time पे ये लोग technologically advanced होते थे. And आज I'm sure काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए होंगे.
बिकॉज 10 साल पहले अगर एडवांसमेंट इतनी थी तो आज तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए होंगे. तो मेरे को आपसे सर 2-3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं. मैं शायद लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था कि जो वेयरेबल डिवाइसेस हैं, वेयरेबल डिवाइसेस, पहनने वाले डिवाइसेस, वेयरेबल डिवाइसेस को आप किस लेवल तक एआई से इंटीग्रेट करना चाहेंगे स्कूल क्लासरूम के अंदर, और एक टीचर को वेयरेबल डिवाइसेस को किस तरीके से यूज़ करने में आप सक्षम करेंगे. हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? बिकॉज आज या कल करना ही है. हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? Thank you, Mr. Anand, and a very good afternoon to one and all present here. The सबसे अच्छी बात मिस्टर आनंद की ये है कि कभी पेपर आउट नहीं करते हैं. He always asks questions spontaneously, and you have to be very genuine so that there are takeaways for people in any conference or anywhere you go. So when you talk about these immersive devices, if it is VR, to be very honest, personally, we have never used this device in a school. We have never used this device in a school. 2 reasons. One, the cost. The second, I felt before we reach out to these immersive experiences, do I have any other option available with me which I can use, exhaust, and feel like, oh, I must go to something else. Let me borrow what Professor Mandal or Dr. Rajput said. We have given you a framework. It has been written by some best brains of the country. Please explore it. Please find out first what is the interpretation of those lines and the forward and the preface and written. Why are you in a hurry to say, isko as it is copy karna hai? First and foremost is the spirit of it. Why is that something called NCFFS written? Why? He said it is a continuous process. We can't just take it lightly. But all our schools and educators in the rat race of putting it on our websites and hoardings and banners ki no, this school has VR, this school has AR, this school is technologically more advanced. Fundamental basic ki baat nahi hai. We don't know that. Just to probably have a little higher fee structure, you do that. So, but if you really ask me, personally, I have experienced that device. In these conferences like this, I had gone, I'd see, yes, immersive learning gives you an opportunity. But I guess there are substitutes available for that. You have a lot of content which is available on open source. You have a lot of content which is available at your disposal. Try and use that, exhaust that. If you feel that the child has understood the concept very well and he's able to respond, because teacher says, when we say formative assessment for learning, you ask questions and you will be able to gauge whether this child is learning or not. And in this process only, you, the teacher, would decide whether I need any aid or not. So if that aid comes to my help, it should be my decision whether I should use this or not. So, Aranji, I answered your question very honestly. I do not use VR, so I have no idea how it is going to affect education, or does it in any ways improve the learning outcomes. That's my response. This is becoming like a Kaun Banega Karodpati. This is becoming exciting now. So 2 panelists have spoken till now. Look at the plethora of richness of material coming out, content coming out here. First panelist says remote part of the country से बच्चे आते हैं. Remote part of the country से बच्चे आए, लेकिन फिर भी gadgets इस्तेमाल करते हैं. They're not scared of using gadgets. Why not put it to productive use? That's what she said, right, Aditi ji, right? Use it to learn something new. Let's teacher facilitate, right? Aditi ji का बोलना है. We should not stand there to teach. We should stand there equally to learn. That's what she said, right? Then एक और अच्छी बात बोली, life hack videos, right? TikTok videos. Not necessarily. Even YouTube has. So, all right, थोड़ा मैं
टेक्नोलॉजी में बोलने के बावजूद थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, तो इसीलिए मुझे लगा कि टॉक वीडियोस, बट नॉट नेसेसरली. ओके, लाइफ हैक वीडियोस आर डिफरेंट. जिनको मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है प्लीज़ एक्सप्लोर व्हाट आर दे एंड प्लीज़ ट्राई टू ब्रिंग इट इनटू द क्लासरूम, बिकॉज अगर एक एडुप्रेन्योर कह रही हैं पॉसिबल है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉसिबल होगा. नाउ दिस इज द फर्स्ट एडुप्रेन्योर स्पीकिंग. द सेकंड एडुप्रेन्योर, देयर इज अ फ्रेमवर्क. सचिन जी बोल रहे हैं, देयर इज अ फ्रेमवर्क अवेलेबल ऑलरेडी, NCFFS. उन्होंने बड़े बोल्ड और विस्तार से बोला उसको, NCFFS. सो आप प्लीज़ NCFFS को फॉलो अगर आपको करेंगे, कंटिन्यूस प्रोसेस को आपको फॉलो करेंगे, तो आपको वैसे भी काफ़ी न्यू इम्प्लीमेंटेशंस करने को मिल जाएगा. राइट, see what you have to actually really bring in and leave aside what you do not want to bring in. कहने का मतलब be wise, use your wisdom to bring in the right technology in the classroom depending on what your specific set of students need. So ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे गया था या मैं यहाँ पे गई थी. Okay, so गया था को भूल जाइए, मैं गई थी में I'll be all my conversations will be now गई थी because neutral general neutral बात करनी होती है. सो मैं यहाँ पे गई थी और मैंने यहाँ पे ये देखा और मुझे ये अपने स्कूल में लाना है. वो एक अच्छी थॉट है, बट टू व्हाट लेवल इज़ योर स्टूडेंट विलिंग टू अडेप्ट दैट टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू सी, इज़ व्हाट सचिन जी हैज़ टू से टिल नाउ. वेरी इंटरेस्टिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी टेक द डिस्कशन फॉरवर्ड टू डॉक्टर नियति चितकारा. डॉक्टर चितकारा इज़ द डायरेक्टर ऑफ द चितकारा इंटरनेशनल स्कूल. नाउ चितकारा मैम, your school is also forefront in technology for quite some time. I'm aware of that. मुझे बताएं, अब there is a new word called as hybrid learning, right? हम लोगों ने flip learning सुना है, blended learning सुना है, हम लोगों ने काफ़ी बात भी किया flip और blended के ऊपर across different platforms. हम समझते हैं what is flipped and what is blended. Hybrid मतलब half स्कूल में पढ़ाई, half घर से पढ़ाई, और कहीं से भी पढ़ाई जहाँ से भी पढ़ाई हो सकती है, यानी experiential learning. लाइब्रेरी में बैठे हो तो भी पढ़ सकते हो, स्कूल के बस में बैठे हो तो भी पढ़ सकते हो, इस होटल की लॉबी में बैठे हो तो भी पढ़ सकते हो, तो भी नया चीज़ सीख सकते हो. तो हाइब्रिड, राइट, एनी टाइम एनी वेयर लर्निंग. हाइब्रिड लर्निंग कितना पॉसिबल है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के तहत, राइट? क्या आपने कुछ हाइब्रिड लर्निंग के ऊपर कुछ नया चीज़ या नया फंडामेंटली कुछ ऑस्ट्रक चीज़ देखी है जो आप चाहेंगे अपने स्कूल में लेके आना? आगे 5 साल में हाइब्रिड लर्निंग क्या जाएगा और किस तरफ हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा अगर आप बोल सकें. पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने आज तक जितनी पैनल डिस्कशंस अटेंड की हैं, ये सबसे इंट्रीगिंग है, क्योंकि पता नहीं कब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज़ अमेजिंग. सो मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि अगर आप देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या है? हाइब्रिड, नॉन हाइब्रिड, कितना हाइब्रिड, कितना नॉन हाइब्रिड, कितना ऑनलाइन, कितना ऑफलाइन, राइट? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस, संतुलन. टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में भी संतुलन चाहिए. सक्सेस मंत्रा क्या है? भले एक प्रोडक्ट का हो, भले एक स्टूडेंट का हो, भले एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का हो, तीनों केसेस में जो इसको चलाने वाले हैं उनके पास वो दिल वाले होने चाहिए, वो दिमाग वाले होने चाहिए, और वो स्किल वाले होने चाहिए. इन तीनों का संतुलन बिगड़ा तो वो खराब करता है. आप इमेजिन कीजिए, क्या आप ऐसा टीचर हायर करेंगे जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनमें अमेजिंग स्किल्स हैं, पर बहुत ज़बरदस्त एडजस्टमेंट और एंगर इश्यूज हैं? नहीं करेंगे. सेम इज़ द केस विद टेक्नोलॉजी. आप कितना हाइब्रिड करना चाहते हैं, आप कितना ऑफलाइन करना चाहते हैं, ये आपके क्लासरूम सिचुएशन, सेटिंग्स, जिस तरीके का लर्नर क्लासरूम में बैठा है उसका लेवल क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है. अगर 40 की क्लास है, उसमें से कितने जो हैं वो स्लो लर्नर्स हैं, कितने हैं जो किनेस्थेटिक हैं, कितने हैं जो म्यूज़िकल हैं, कितने हैं जो ऑल फैक्ट्री हैं, कितने ऐसे लर्नर्स हैं जो टेक्नोलॉजी लर्नर्स हैं. तो ये आपको ये संतुलन एज एन एजुकेटर बनाना पड़ेगा. वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलेगा. टेक्नोलॉजी की आदत रही है स्टैंडर्डाइज करने की, लेकिन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की आदत रही है उसको टाइम एंड अगेन चैलेंज करने की. सो मेरा सजेशन ये है कि भले हाइब्रिड कीजिए, भले नॉन हाइब्रिड कीजिए,
बट लर्नर सेंटर्ड कीजिए, स्कूल सेंटर्ड कीजिए. एक और सजेशन देना चाहूँगी, बहुत टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं बाहर जिन्होंने वंडरफुल स्टॉल्स लगाए हुए हैं. मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी स्कूल सेंटर्ड प्रोडक्ट्स बनाइए. आप वो टेक्नोलॉजी लाइए जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो. टेक्नोलॉजी का मतलब है लाइफ आसान बनाना, टफ बनाना नहीं. हम सब डेटा डाले जा रहे हैं सुबह से रात तक, उसका भी तोड़ निकालिए, यू नो. सो इसीलिए टेक्नोलॉजी को स्कूल में आना पड़ेगा, आम जिंदगी जीनी पड़ेगी, एक प्रिंसिपल की ज़िंदगी, एक टीचर की ज़िंदगी, एक बच्चे की ज़िंदगी. तब प्रोडक्ट बनाइए. ग्रास रूट से शुरू करेंगे, बहुत आसानी होगी. सो दैट्स व्हाट माय टेक इज. और एक एग्जांपल और देना चाहूँगी. थैंक यू. एक एग्जांपल और देना चाहूँगी. टेक्नोलॉजी, जितने यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स हैं, सब कंटेंट बनाते हैं ऑन ट्रांसपोर्ट, एकेडमिक्स, दिस दैट. व्हाट अबाउट को करिकुलर्स? कोई नहीं बनाता. एक प्रोडक्ट नहीं मैं देखती जिसमें बच्चे की एडजस्टमेंट ट्रैक होती हो. एक प्रोडक्ट नहीं मैं देखती जिसमें उसका म्यूज़िक, अब म्यूज़िक में फिर भी 2-4 लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, डांस में कहीं नहीं है, और एरियाज़ में नहीं है, हॉस्पिटैलिटी ग्रूमिंग में नहीं है, यहाँ तक कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी लाइव वीडियोज़ हैं, राइट. को करिकुलर्स सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट एरिया है, उसमें भी हाइब्रिड पॉसिबल है, उसमें भी टेक्नोलॉजी पॉसिबल है. और असेसमेंट्स तो कोई करना ही नहीं चाहता को करिकुलर्स में. सो प्लीज़ ऐसे प्रोडक्ट्स लाइए जो स्कूलों को चाहिए, एंड होल हार्टेडली स्कूल फ्रेटर्निटी उनमें इन्वेस्ट करेगी. सो दैट्स, I don't know whether I stick to the topic or not, but I just spoke what I really wanted. So a talk which has got beauty with brains. Very nicely said, ma'am. बहुत बढ़िया. बहुत अच्छी चीज़ क्या लगी? She spoke about balance, the right kind of balance, right? She spoke about balance between 3 things: dil, dimag, and skill, right? Now. एक और चीज़ कहना चाहूँगी सर इसमें. please. एक चीज़ मिसिंग है दिल, दिमाग और स्किल में. वो स्किल जो उसको परख रहा है, उसकी स्किल कहाँ है? उसको जो आँख रहा है, वो स्किल कहाँ है? हम बच्चों को तो असेस कर रहे हैं, जो टीचर तैयार हो रहे हैं, हम उनको कहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, बीएड कोर्स में कहाँ एआई है? बीएड कोर्स में कहाँ मॉड्यूल है जो टीचर्स को, हम ATL लैब्स हैं हमारे स्कूल में. You know, we have a university, so it becomes easier for us to have a applied engineering person coming and running our labs. What about government schools जहाँ tinkering labs हैं और teacher skilled नहीं है? और उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पे ये technologies नहीं थी. It's a big gap, and we can't put the entire pressure on CBSEs and NCRTs and SCRTs. हम सबको मेहनत करके इस गैप को पूरा करना पड़ेगा. हम सब फेस करते हैं. आप मुझे बताइए, टेक्नोलॉजी में जितना इनोवेशन स्कूल एजुकेशन में हो रहा है, क्या टीचर एजुकेशन उस पेस से चल रहा है? ये मॉड्यूल्स मिसिंग हैं. डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ मिसिंग इन बीएड. सो जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, जो आगे जाके हमारे स्कूलों में हायर होंगे, उनको ये सब नहीं आता. फिर हम स्कूलों का बहुत पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, टाइम लगेगा ऑन ट्रेनिंग देम फॉर टेक्नोलॉजी. सो ये एक रिक्वेस्ट है. We all have to work on this. Thank you, sir. So, thank you very much, Dr. Saab. Arijit Ghosh should be the happiest person around. He has been speaking about skills across all the platforms. First row में बैठे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं जब मैम ने skills के बारे में बात करी. So nicely said, Dr. Chitkara. दिल, दिमाग and skills का balance. इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ पूछी कि आपको अगर एक ऐसा टीचर मिलता है जिनमें सारे गुण हैं, but then she has a lot of anger and aptitude issues, will you select the teacher? Such a nice way of putting it across. Similarly, technology, सब कुछ अच्छा है, but will it really solve your purpose? Will every child benefit out of it? So whatever technology you adopt has to be learner-centric, school-centric. Very nicely said, ma'am. Nicely said. Thank you very much. So let's go further to one more round of good implementing technology for quite some time. So I last visited their school somewhere in 2008 and 9. तब भी आपके स्कूल में काफ़ी कुछ नई चीज़ें होती थी. You as a school believe in bringing all the new stuff into life, right? We know that, right? Most of us know that.
एंड आपके पर्टिकुलर स्कूल में अगर आप देखेंगे तो एक यू डोंट हैव दोज प्रॉब्लम जो हमारे काफ़ी सारे स्कूल्स में होते हैं, जो सेकंड लेवल, टायर 3, टायर 3 लेवल स्कूल्स में होते हैं, जहाँ एफ्लुएंस की प्रॉब्लम आती है, राइट? आपकी नॉर्मली people who come to you are affluent enough to, you know, spend the whatever gadgets and whatever things that needs to be bought in. But with all the gadgets being provided to kids at an early age, and with all the you know, different life hacks, जैसे Aditi ने बोला, बच्चे के पास access है, wearable devices access है, all the different AIs, robotics access है. Mental health का क्या? Right? Of late, I was talking to one of my children. We have a session wherein we talk to the stakeholders, where children are also a stakeholder. तो हम बच्चों से भी बात करते हैं. So एक बच्चा एक बड़ा अजीब सा वो था. This child is a 12th class student. The parent wants this child to go in IPM program. Indore has a beautiful program called as Integrated Program in Management. तो ये बच्चा उसका aspirant है. The child, she's a commerce student, but then the child wanted to take humanities. Parent ने नहीं उसको allow किया. The child has a specific interest of video game development. रात को पढ़ाई वगैरह ट्यूशन्स ख़त्म करने के बाद पूरी रात बैठ के बच्चा गेम्स खेलता है और उसके बैक एंड देखता है कि कैसे डेवलप होता है. सुबह 6 बजे तक 7:40 की हमारी लॉन्ग बेल लगती है DPS में, राइट? द चाइल्ड हैज़ टू रिपोर्ट टू स्कूल एट 7:40 इन द मॉर्निंग. तो 6 o'clock तक गेम खेलता है. ये बच्चा सोता कब है, राइट? और बच्चे का जब मैंने नेक्स्ट थिंग आई डिड इज आई ओपन माई ERP एंड आई सॉ द ट्रैक रिकॉर्ड दिस चाइल्ड इज अबाउट 95% और समथिंग. तो यानी कि बच्चा क्लास में भी परफॉर्म कर ही रहा है, क्लास में भी परफॉर्म कर रहा है, ट्यूशन में भी डेफिनेटली परफॉर्म कर ही रहा होगा, राइट? एंड अपना इंटरेस्ट भी परस्यू कर रहा है. बट वॉट इज हैपनिंग टू द चाइल्ड्स फिजिक, हर माइंड? 8 घंटे की नींद हम सब जानते हैं आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? जो लोग सोचते हैं कि 8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट नहीं है और हम 6 घंटे सोने लगे थे बिकॉज ऑफ आवर टफ लाइफ्स, वी नो व्हाट्स हैपेंड टू अस. So the question to you, ma'am, is with these disruptive technologies coming into place, where do we stand today? Where does today's millennial stand in terms of mental health? And we as schools, we as educators, what responsibility do we have towards giving them a protective environment for development of mental health? Correct. Thank you for the question. Good afternoon, everyone. So when it comes to talk about the mental health, everybody knows it's very, very important. ना ही सिर्फ बच्चों की, I think parents की भी उतनी ही important है. And with loads of technology coming into place, कहीं ना कहीं हम लोग के सब, जिसे आप कहते हैं इंद्रिया, we are all utilizing for and on our gadgets. We open our eyes in the morning and the first thing that we do, and I'm pretty sure that 80% would be looking at their phones, WhatsApp. यहाँ पे भी बैठे हुए सारे लोग अपने मोबाइल्स को चाहे साइलेंट पे रख दिया होगा, बट आई एम वेरी श्योर बीच बीच में देख रहे होंगे किसका WhatsApp मैसेज आया है या नहीं. सो मेंटल हेल्थ पे फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द जनरेशंस टू कम, एंड ऑफ कोर्स ऑन द पेरेंट्स एंड ऑन द टीचर्स इज़ अ लॉट ऑफ लोड. और उसको सही कैसे करें? बहुत सारे टॉक्स होते हैं, जैसे ये भी टॉक हो रहा है, बहुत सारे टॉक्स वैसे भी हुए हैं मेंटल हेल्थ पर, वेलनेस पर. बट व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? हाउ डू वी इंटीग्रेट इट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? So I'll give you a very small example that I did in my school, because you already know that our school works with technology for the benefit of the learners. A lot of floods coming, everybody is a witness to the same. And now the question was, a primary student came to me in my office and asked, ki, ma'am, why so many floods are coming? I did not give him the answer. I told him, go back and ask your friends, ask your teachers, ask your parents, ये climatic change क्यों आ रहा है? Go and explore. This is what NEP states, right? So go and explore. Then he comes back to me and he says, ma'am, chalo, let's go for a school round. I went to on a school round with him, and we saw in every classroom, in every section, the dustbins were full of the tissue papers. And we ourselves in the school were providing the tissue papers in the washrooms and in the staff rooms. So he said, ma'am, is it related? Is it related to the floods that are coming? Is it related to the climatic change? I said, go back and explore further. You've come up to this stage, now go back and explore further.
So he went back home and he talked to the parents, he talked to his friends, and then he came with other 5 students to me. And he said, "Ma'am, I want to stop using the tissue papers now." So I said, "Why?" So then he told me that it is made up of the fiber, and 80% जो हमारा tree cutting हो रहा है, that is because of the consumption of the tissue papers and the toilet papers. So this is now coming to technology. I said, "What is the next step that you want to do?" So he stated, "Ma'am, my friends and I, we would suggest to use technology to generate a survey for the students in the school." So I created, I'll be honest, because वो छोटे बच्चे थे, तो उनके साथ में मैंने बैठ करके सर्वे क्रिएट किया जिसमें सिंपल 7 क्वेश्चंस थे. And 99% लोगों ने कहा that they can lead a life without using the tissue paper. So now we are actually, what we are doing is कि हमने education भी करा, उनको research work भी दिया, हमने technology का use भी करा. So वहीं पे रुका नहीं. Now what next? So then I said, what about doing an inter-class video conference? You become the role models, you become the mentors. Now you 5 children take the lead, do inter-class video conference on issue with tissue. So they did the issue with tissue cross sections, and now it is coming to become an active learning. Now we are going to, I have not reached stage 3. Now stage 3, we are going to release a circular with the study that my children have done. And we are going to pass it on to the parents, stating that no more we are going to give the tissue papers or the toilet papers in the school because we want to save the planet Earth, and this is what my children have come up with. So we have been trying to amalgamate technology, research, education, awareness in this system of education. So this is what is a very small example that I wanted to quote. Thank you. This is what I really like about these forums, you know. इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी सरलता से और इतनी सहजता से बता दिया जाता है कि they are more implementable so practically, right? So look at how she said, Ms. Shruti Sharma. सबसे पहले तो नाम बड़ा अच्छा दिया आपने, issue with tissue, right? So she subtly did a major catastrophe here. I don't know how many of you could really catch that out. Sustainable Development Goal number 4, right? Environment aspects. उन्होंने अभी उसके ऊपर बात किया. Without even uttering the word called Sustainable Development Goal, goal number 4, उन्होंने उसके ऊपर एक पूरी पारायण बता दी अभी, right? How can you really work upon the environment? How can technology be of help to you in, you know, going ahead with the Sustainable Development Goal of the country? Very, very beautifully said, ma'am. Sachin ji कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने mic उठाया, please, please. So what I borrowed from her experience when we talk about mental health, so intelligently, it is the teacher who would probably deviate and bring the child away from technology by engaging him productively in something which is going to give them that value addition in their mindset कि I have to be away from this. If I would like to use technology and ensure that this fear of missing out, FOMO, कि मैं तो, it's only me who's not using it, बाकी सब लोग use कर रहे हैं. So that can only happen if this constructive approach by a teacher, her attitude in using and giving that right kind of an impetus to the child on a daily basis, that okay, it is easy, it is okay not to be okay, you come and express, let me use your skill set, because हर बच्चे के अंदर every child is unique, so I use his skill set in something which engages the child as per my understanding of a teacher. If the formative years and also middle school, I know that maximum neural connections are happening at the initial stage. So I would be intelligent enough to know how much technology I am using. And cases like this will also help any educator to feel that no, beside using technology, there are other multiple options available to use that. Absolutely, absolutely. Very nice, very nice. I have one more question to these panelists here, then I have an open question to the audience. So this can be an open question, anybody can take it. Technology has got a negative impact also. We have already discussed that, right? Today a child may have 100
friends on social media, but एक real time friend उसका नहीं होता है, right? It's common across, सभी के घरों में common है, सभी की families में common है. I'm sure you would relate to what I'm saying, right? FOMA, which is the biggest fear today. What is the fear? Fear is not about मैं आगे क्या बनूंगी या आगे क्या करूंगी, वो fear नहीं है. Fear is if I don't go onto something called as social media, I'm not wanting to take names, but if I don't go to social media, I'll miss out on something. Fear of missing out, FOMA, right? That is the biggest fear now. Devices are easily accessible, right? My daughter uses these devices in the classroom also. This is my fear as a father also, which I'm expressing. मैं जब भी उसको कुछ टेक्स्ट करता हूँ, वो कुछ भी क्लासरूम में वो आंसर करती है टेक्स्ट में. अब वो पढ़ती है कि क्या करती है, I God knows, right? But ठीक है, she's good at that, right? So my question to this esteemed panelist here, how do you, okay, before I go there, संतुलन भी बोला था उन्होंने. अब ऐसे हालात में संतुलन लाएं तो लाएं कैसे, right? Anybody wants to take it? All right, okay, sure, please. I think for us, it's a little easier being a residential school. We don't allow their own phones. We have very set device times and they use school devices, which are controlled on what they can access. But having said that, I think the balance, and it also goes to the mental health aspect, or the child that you were talking about who's staying up all night working on his video games, is they cannot stop playing. And you know, Niyati ma'am has been emphasizing this, I think, all morning as well. Co-curriculars ka kya? So it's very important. Co-curriculars are important for mental health as well. For them to be able to do something that's outside the textbook, outside the classroom, but also outside the devices. Every child, you know, we tell adults, find your passion every week, do something that's only for yourself, mental health ke liye, warna frustrate ho jaoge. Same applies to kids every day, at least for an hour, maybe more. Children should be doing something outside of the routine that they are good at, that they like to do. And co-curriculars are important. Playing is very important, physical play. And that's where the social skills also come. It takes care of the FOMO, because when you do a team sport, say you go play football, right, or basketball, inevitably somewhere you are making social associations, you are making friends. Outside of the video, outside of the devices, it's not a digital friend, it's a real friend right next to you. So this is something, if we don't encourage in our kids, it will be lost at one point, because it's so easy to communicate online. Sorry, I'm going to speak for another 30 seconds. We had an experience last year, 10th grade kids, we were hanging out with them doing some project, and they were all excited. Next week, ma'am, we're all going home. And I said, oh, you're excited to go home, what are you excited for? I get my phone. So I said, oh, but all of your friends are here. Yeah, ma'am, we're going to keep in touch with each other on our phones. And to them, the real world is keeping in touch on their phones. And to me, it was so odd, because it was like, सारे यहाँ पे ही बैठे हैं, सेम ही तो चीज़. In fact, isn't this better? नहीं, वो phone पे ना बातें करने में और मजा आता है. So that's the generation, and we have to accept that that is the generation. They will never be like us. They will prefer the digital world, but we have to give them the balance. So I'm picking a thread from what she said. This is the generation, right? तो उनको वो gadgets के साथ ही रहना है, उठना बैठना उसके साथ ही है. I just take 2 more minutes, I'll wipe up. Don't worry about it. Right? Even before you say something, the Gadi is on my mind. Yeah. So, all right. So उनको उसके साथ ही उठना बैठना है. They have to be with it. They have to be in the classroom with it. Right? At least जब आप अलाउ करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वो वही लेके आएंगे. Right? 15 साल बाद क्या आने वाला है as a skill, we really don't know. Right? आज की डेट में विद द चैट जीपीटीज, बाय द वे चैट जीपीटी कितने लोगों ने वाकई में टाइप किया है? लवली लवली लवली, क्वाइट अ फ्यू ऑफ अस. किसी ने अगर नहीं ट्राई किया हो तो ट्राई करिएगा. ठीक है? हाउ डू आई डू माई अप्रेजल यूजिंग चैट जीपीटी करके करिएगा पहले, बहुत इंटरेस्टिंग होगा. सीरियसली बता रहा हूँ, आपको क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है, एक एक चीज़ बताएगा. जो आपके माइंड में नहीं था वो भी बताएगा. राइट? सो लाइफ बिकम्स वेरी ईजी. राइट? सो विद चैट जीपीटी इज कमिंग इन, बहुत सारी जॉब्स no longer are important, right? Assistants, translators, right? Proofreaders, editors, इन सब की jobs practically खतरे में हैं, because they do a better job than, मतलब आपने देखा ही होगा, आप आज की डेट में ड्राइविंग करते हैं, गूगल मैप को बोलते नहीं हो, टाइप नहीं करते हो कि मुझे यहाँ जाना है. आप सिर्फ उसका बटन दबाते हो, उसको बोलते हो कि भाई मुझे रेडिसन लेके जाओ, वो अपने आप लेके जाता है आपको यहाँ पे. That's the AI integration of chat GPTs and stuff, right? So with these kind of technologies coming in, 15 साल बाद
क्या चाहिए आपको, यू डोंट नो. टर्मिनोलॉजीज क्या है? AI, ML, IoT, blockchain, big data, right? AR, VR. AR, VR तो खैर पुराना हो गया अभी. So these are the new terminologies which are going around in the market. जो पीछे टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे हमसे ऑर्डर्स लेने के लिए आए हुए हैं, वो तो खुश हो रहे हैं ये सब लैंग्वेज सुन के. हम में से कुछ घबरा रहे हैं, ब्लॉकचेन यार क्लासरूम में क्या करूँगा, ब्लॉकचेन का, बिग डेटा का क्लासरूम के अंदर क्या करूँगा. आई एम ऑल्सो क्वाइट क्लूलेस कि क्या करूँगा, राइट. हाँ, कर बहुत कुछ सकते हैं, बट यस्टरडे आफ्टर सीइंग द डॉक्यूमेंट्री ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म्स इतना समझ में आया कि AI नया रोबोटिक्स बनाने में काम अच्छा आ सकता है और बच्चों को उसके ज़रिए कोई एक नया साइंटिफिक चीज़ों को डेवलप करने में, रिसर्च करने में काम आ सकता है, बहुत अच्छे से आ सकता है, राइट. सो इट कैन डेवलप कंटेंट, इट कैन क्रिएट कंटेंट, इट कैन असेस द टीचर, बहुत कुछ कर सकता है. उसके बियॉन्ड क्या कर सकता है, दैट इज़ अपॉन द टीचर्स हु आर हियर, द एजुकेटर्स हु आर हियर टू रिसर्च एंड फैसिलिटेट इन द classroom, right? How many of you are willing to do that? How many of you have any experiences? If I can take 2 minutes to share any of your such kind of experiences, we'll be more than happy to learn from you. If anybody wants experiences of using AI, blockchain, ML in the classroom, please come forward. If nobody wants to share, not a problem. Please try out. Little starting is a small thing always. Start with a small thing, right? Take it to a big thing. Please, ma'am. Students' competency assessment, okay? Planning, remediation, lovely. And how has your experience been? You have been able to really do something good about it? The first year, superb. So schools have really started using it. So kindly start using to the basics at least, right? कहीं ना कहीं शुरुआत करिए, बहुत मजा आएगा आगे चलते हुए, right? So with that, I would like to say a thank you to everybody around here, to all the panelists around here, Chandan and team, right? Great pleasure being here, and look forward to such beautiful discussions in future also. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. So sorry, sir, but we are running late by 1.5 hours, so we have to keep the time protocols. So, yeah, sir, thank you so much. So I request now Mr. Chandan to come forward to present mementos to our moderators and our panel speakers. Everybody, please put your hands together. Indeed, a very productive session. Indeed, a very informative session. Thank you. Can I have Mr. Chandan Anand, please? I request. Everybody, please put your hands together. Thank you so much for being a part with our panel discussion, everyone. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much for giving your time. We got perfect insights into disruptive technologies transforming education in the 21st century. So indeed, it was a very informative session. We are very glad to have all the panel speakers onto the meeting. Everyone, can we please raise our hands? Thank you.